Sonia, Yes, you can start. Sonia, we wait for 2 minutes. Okay. Yes, sir. Sure, sir. Sure. Okay, you can start when you want. No problem. Yes, sir. 2 minutes we can wait, sir, and after that we'll start, sir. Sure. Yes, Sonia, please Yes, start. sir. Good morning, everyone, and welcome all of you for our today's Research Start lecture series, which organized by our ATA Student Wing Committee since last 1 month. And I will definitely sure each and every students will get benefits of this lecture series. For today's lecture series, I would like to invite our most favorite teacher, Dr. Kiran Tavlare, sir. Welcome, sir, and request you to start our today's session, sir. Yes, I will start. Okay. My slides are visible? Yes, sir. I am audible perfectly? Yes, sir. Okay. Now we are going to start. Today's our, I think, fourth session of ATA Student Wing. So that's why, first of all, I congratulate student ATA Wings, Dr. Krishna and Dr. Sonia, especially. I am very thankful to Teachers Association President Dr. Rahul sir, Secretary Manoj sir, and Upadhyaksh Dr. Chandurkar sir. Okay. I am also thankful to Dr. Gaurav Savarkar sir, okay, who gives me opportunity to explain or to put my opinion in front of students. So I think now we are going to start our lecture, okay, without wasting time. Okay, today's topic is sampling techniques and sample size. दो टॉपिक्स है, दोनों अलग अलग है, थोड़ा वास्ट है, हम स्टार्ट करते हैं एक. What is the SLOs? Today's meeting or today's sessions SLOs are to use the different kinds of sampling techniques. First of all, different kinds of sampling techniques. Which are they? Second, to understand the basis behind the sample size. What is the exact basis of sample size? And last one, calculate individually. Okay, calculate sample size individually using OpenEP software. That is a freely available software by WHO Atlanta. Sampling technique. All of you know what is population. There are two basic sampling techniques. We just go fast. There is a population. Population basically having two types. One is heterogeneous and second one is homogeneous. Then what is meant by sample actually?
the part of population drawn by scientific method from detailed study. Okay, for detailed study means this is population and drawn sample from this population by scientific method, using some scientific method, is called sample. Why sample? Means why sampling is necessary? Number one, shortage of resources. अगर हम पूरे population लेंगे तो resources हमारे पूरे नहीं, right? Time saving. Third important thing is detailed examination of a smaller unit. हम सभी लोगों को अगर हमारे स्टडी में इन्वॉल्व करते थे या करते हैं तो हम सभी यूनिट्स का, सभी पर्सन का, सभी सब्जेक्ट्स का डिटेल एग्जामिनेशन नहीं कर पाते. ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है. पॉपुलेशन में भी इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट पॉपुलेशन है. बहुत बार ऐसे होते, बहुत इनफाइनाइट पॉपुलेशन होने के कारण उसमें एक्यूरेसी नहीं आती है, इसलिए हम लिमिटेड इसमें काम करते हैं. व्हाट इज सैम्पलिंग अगेन? The process of drawing the sample from the population, this process is called sampling. Okay, common term use. What is the common term? Number one, parameter, and number two, statistics. Parameter for population and statistics for sample. मतलब जब हम population के पैरामीटर की बात करते हैं, population के वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो उसमें पैरामीटर्स कहते हैं, और सैंपल्स के वेरिएबल्स की बात करते हैं तो उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. ओके, स्टैटिस्टिक, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? Statistic is the nearer value or nearer to the truth that of parameters. Okay, sampling method or techniques. There are basically two techniques: probability sampling and non-probability sampling. Then all of you very well know what is meant by probability. Is also called as non-purpose or random sampling also. Okay, what is the exactly use of this probability sampling? Why we are using probability sampling or random sampling? Basic and foremost cause is to generalize the result to that population. For example, this is our population, this is our sample. We drawn this sample from this population, correct? Okay. But after completion of study, if your sample is not perfectly drawn from same population, after completion of your research, you cannot generalize your result to that same population until your sample is not selected by randomly. Okay, that is one most important cause for randomization, generalization of a result. Okay, next one is probability sampling. Types of probability sampling. Very easy: simple random, systematic random, stratified, cluster. Okay, multi-stage, multiphase. These are the basic 6 types of sampling, random sampling. Number one, simple random, systematic random, stratified, cluster. Then multi-stage, and last one is multiphase. Okay, we will see one by one. For example, first is simple random sampling. Simple random sampling. Simple, if you wish to understand a simple random sampling, you just remember the lottery method first, and then understand the simple random method. For example, every unit of the population has equal chance of selection in random sampling. For example, this is bowl and having some cheats. Okay, we put one cheats by lottery method. Means here every cheat or every person present in that bowl having the same chance to be selected for sample. Such system or such a methodology is called simple random sampling. When we use this system, number one, when population is small, homogeneous, and readily available also. For example, student of our class, small, also homogeneous, and also readily available. Okay. First of all,
प्रिपेयरिंग द सैंपल फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रेम मतलब अगर हम क्लास की बात करते हैं हमारे प्रेजेंट ही होती है, लाइक सैम्पलिंग फ्रेम बनाना या उसकी हम चीट बनाएंगे लॉटरी मेथड से अगर करना है तो, राइट. Preparation of the list, that is list of patient or list of houses or list of whatever may be. Then deciding the sample size. We will see how decide the sample size after that lecture. Selecting sample by the lottery method, table of random number. हर statistics के book के पीछे random number table होता है, okay? उसका यूज करके भी हम सिंपल रैंडम मेथड चूज कर सकते हैं. या फिर बहुत इजी आजकल एक अवेलेबल है पर है दूसरा, यूजिंग कंप्यूटर जनरेटेड टेबल. मैं आपको ये दिखाता हूँ. कंप्यूटर जनरेटेड टेबल ये बहुत इजी है. देखिए पहले ये टेबल देखते हैं, रैंडम नंबर टेबल. एक टेबल होता है तो आप इसको कैसे भी लाइक हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं या वर्टिकल जा सकते हैं, फर्स्ट 2 वर्ड जा सकते हैं, फर्स्ट 1 वर्ड जा सकते हैं, जैसे आपके सैंपल है ना. जैसे आपको 50 सैंपल चाहिए तो पहले आप 10 तक तो पहला लेंगे तो 6 वाला अंदर आएगा, 9 5th और 5 फिर 8 9, एक बार 1 to 10 हो गए. उसके बाद हम 2 अंक लेंगे, 20 27 फिर से वापस. तो ऐसे रैंडम नंबर टेबल में आप कितनी भी सैंपल रैंडमली चूज कर सकते हैं. सिंपल रैंडम सिस्टम में कैसे होता है, जैसे आपने लॉटरी मेथड निकाला और पहला पेशेंट है, पहला स्टूडेंट निकला 20 नंबर का, करेक्ट. उसके बाद 40, फिर अचानक 29. तो ये रैंडमली सिलेक्टेड आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं किया गया, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सिलेक्शन. मैंने कहा था कि रैंडम नंबर टेबल हम यूज कर सकते हैं. आज से आप इस साइट को याद रखेंगे सभी लोग. इसका नाम है ओपन ईपी. ओपन ईपी WHO की साइट है, ऑथेंटिक है, ओके. openep.com. इसके ऊपर ही हम आज पूरा हमारा सैंपल साइज भी इसके ऊपर ही पढ़ने वाले. तो सैंपल साइज की मजा तो तब आती है एक्चुअली कि जब आप हैंड्स ऑन करते हो. मैं इधर से बताऊंगा और आप वहां पर ओपन करके सब करके देखेंगे, है ना. अदरवाइज थ्योरी हो जाती है कंप्लीटली, कोई फायदा नहीं. तो रैंडम नंबर टेबल आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करिए और आपको इतना बताना कि आपको कितने नंबर चाहिए, 25 50 100, एंड कंप्यूटर विद इन सेकंड जनरेट ऑल दैट नंबर. Okay. Systematic random sampling. First one is simple random. Second one, systematic random sampling. Here, complete list of population is available. This is a very important thing related to systematic random sampling. Complete list of population. Then only first unit is selected. For example, this is your list, okay, and you selected only one unit, a first unit or first sample. Then after that, you select subsequently sampling by using simple one method. I tell you, for example, sampling interval. Your sampling interval, how to calculate sampling interval? Capital N divided by small n. For example, you have 100 number of subjects, okay, but you have only 10 out of that 100. Okay. Then what can you do for 10? Simply, if you have the list of that 100 subjects, you have to select first one subject from first 10 subjects. Then only first is 100 में से पहला सब्जेक्ट आपको पहले 10 में से लेना है, क्योंकि टोटल 10 ही लेने हैं, करेक्ट. After that, randomly select an integer between the 1 to kth. Take every kth unit. मतलब अगर आपने पहले 10 में से कोई भी आपने रैंडमली सिलेक्ट किया, वाया 7th, जस्ट इमेजिन 7th है, तो आपका kth यूनिट कौन सा हो गया, ये हो गया 7th. Okay, and then pick up the further sample size using that kth unit, that is 7th unit. मतलब you just plus 7 plus 7 plus 7. First unit is 7, next one is a 14, third one is a 21, like that. That means your sample is also distributed well throughout the population. Okay, but here one drawback, that is a pattern of periodicity.
अगर आपका इसमें 7th नंबर का आया तो इट इज कंफर्म दैट इसके बाद 14 ही आएगा, उसके बाद 21 ही आएगा, करेक्ट, लाइक दैट। अगर आपको 5 में से चूज करना है, जैसे ये 5 है ना, ये 5 ऐसे ना, तो हमको पहले 5 में से 1 चूज करना है। रैंडमली हमने लॉटरी मेथड से या रैंडम नंबर टेबल से चूज किया, 4th आया, देन 4 + 5 दैट इज 9, 9 + 5 दैट इज 14, लाइक दैट। ओके, तो ये जो बंदा है ये सिलेक्ट हो गया, ये और ये। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल, थर्ड वन इज स्ट्रैटिफाइड, नाम से समझता है स्ट्रैटा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन, द प्रोसेस in which population divided into the strata, then drawing random sample from each strata। मतलब अगेन रैंडम सैम्पलिंग करना है, लेकिन पहले आपको पॉपुलेशन को स्ट्रैटा में डिवाइड करना। स्ट्रैटा मींस स्मॉल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। ओके, यूज ओनली पॉपुलेशन इज नॉट होमोजेनियस। जब आपकी पॉपुलेशन नॉट होमोजेनियस नहीं है तब हम ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कास्ट, रिलीजन, एज, सेक्स, इनकम, ये जो फैक्टर्स होते हैं इसके लिए हम खास करके स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का यूज करते हैं। Then simple random or the systematic random method or proportionate respectiveness, okay, sample from each stratum। मतलब एक बार अगर आपने स्ट्रैटा फॉर्म कर लिया तो अगेन कौन सी मेथड यूज करना है, जैसा ये आपका पॉपुलेशन था, ये आपने स्ट्रैटा बनाया सेम वाला, ओके, और ये स्ट्रैटा से जो आगे के सैंपल लिए वहां पे कौन सी मेथड यूज किया। अगेन 2 ऑप्शन हो गए अभी आपके पास, एक तो सिंपल रैंडम या सिस्टमैटिक रैंडम। ओके, सिंपल और सिस्टमैटिक, याद रखना अच्छे से। देन क्लस्टर, व्हेन द पॉपुलेशन इज हेटेरोजेनस एंड स्कैटर्ड, जब जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर बहुत स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, खास करके हेटेरोजेनस पॉपुलेशन है ना, लाइक वाइट नंबर ऑफ स्कूल, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, और area divided into some geographical areas। In cluster sampling we take a random sample of strata। again देखिए क्लस्टर में भी हम क्या कर रहे हैं, रैंडम सैंपल ऑफ स्ट्रैटा, मतलब जो एरिया वाइज जो पार्ट किए थे हमने, ये तो स्ट्रैटे हो गए ना, तो एरिया वाइज जो पार्ट किए थे या एरिया वाइज जो स्कूल हमने सिलेक्ट की थी, ओके, उसको सबसे पहले हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर ये नागपुर का मैप है, राइट, तो इसके कुछ एरिया होते हैं जियोग्राफिकली, ऐसे 5 एरियाज है, ओके। तो मुझे अगर स्टडी करना है कोई भी 2 एरिया में, 1 एरिया में, 2 में, तो मैं लॉटरी मेथड से या सिंपल रैंडम मेथड से एक एरिया फाइनल करूंगा। 2 कौन से, ये 2 एरिया है, करेक्ट, ये 2 स्ट्रैटा हो गए मेरे, और उसके बाद हम जाएंगे एंड देन सर्वे एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 स्टेप है, लिस्ट ऑल द क्लस्टर, मतलब विलेजेस होंगे, सिटी होंगे, जो भी आप ले रहे हैं उसकी लिस्ट आपके पास होना, या अगर बड़ा जियोग्राफिकल एरिया तो उसकी लिस्ट आपके पास होना विद देयर इंडिविजुअल पॉपुलेशंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल पॉपुलेशन की लिस्ट कंपलसरी। कैलकुलेट क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन फॉर ईच क्लस्टर। फिर कभी कोई क्लस्टर छोटा हो सकता है, कोई क्लस्टर बड़ा होता है, तो जब एक क्लस्टर है, फॉर एग्जांपल ये वाला क्लस्टर, इसकी पॉपुलेशन है 10,000 और ये वाला जो क्लस्टर इसकी पॉपुलेशन है 15,000, तो जब भी आप रैंडम सैंपलिंग करेंगे, ओके, तो यहाँ से अगर आप 100 सैंपल निकाल रहे तो यहाँ से आपको 150 निकालना पड़ेगा। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन, दिस वर्ड, मतलब उसको प्रोपोर्शनेट ही आपको सैंपलिंग करना है। फॉर एग्जांपल इट इज सैंपलिंग इंटरवल, टोटल क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 30 क्लस्टर। आप बोलेंगे 30 क्लस्टर कहां से आए, नॉर्मल ऐसा रूल नहीं है, लेकिन WHO में जो 30/7 का एक रूल चलता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने के लिए, इसलिए 30 सैंपल का एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हम सैंपल लेते हैं तो सैंपल कितनी होनी चाहिए, तो बहुत दिन तक वही चला कि 30 होनी चाहिए, तो ये 30 कहां से आया, तो लाइक दैट ये 30 है, ठीक है। डिटरमाइन सैंपलिंग इंटरवल, यस, फर्स्ट सब्जेक्ट select by simple or systematic random method by adding the sample interval
to the selected random number second and subsequent cluster are selected. Same. अगर आपके पास बहुत सारे क्लस्टर है ना, बहुत सारे 50 क्लस्टर है या 200 क्लस्टर है, ओके, 200 क्लस्टर में से आपको 300 ले लेते इजी रहता, 300 क्लस्टर है उसमें से आपको 30 लेना है, ओके, मतलब 100 में से 10 लेना है, अगेन सेम। और जब 100 में से आपको 10 ही सिलेक्ट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका 10 क्लस्टर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 में से आपको एक पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग यहाँ से हो, अगेन बाय सिलेक्टिंग रैंडम सैम्पलिंग, okay, and then add this particular number in subsequent sample and select the other sample in your sample unit. Two-stage cluster. What is your two-stage cluster? Okay, two-stage means a random sample of the cluster is selected. Within each cluster, a random sample of subject is again selected. But first you select the cluster like that, 4 or 5 clusters, and after selecting this cluster you will again select the subject of that cluster by simple random or systematic random, whatever may be. This is called two-stage cluster sample design. WHO cluster sampling to evaluate the vaccination program, जो अभी आपको बताया था 30/7, that is 2 10 children, 30 cluster, each cluster having 7 children, 30/7 program. Okay. Next is, what is the difference between the stratification and the clustering? Stratification depends upon sometimes sex, races, or age, but cluster is a geographical area like school, cities. Okay, sample randomly from each group. Sample selected randomly from each group. Here selected some of the group. क्यों क्लस्टर जो होते हैं उसको भी सिंपल रैंडम से सिलेक्ट करते हैं पहले, और बाद में ईच क्लस्टर में जाके उसको और दूसरे मेथड लगाते हैं, कौन सी, सिंपल रैंडम या सिस्टमैटिक रैंडम। तो यहाँ पे डबल सैम्पलिंग हो जाती है, टू स्टेज सैम्पलिंग कहा इसलिए क्लस्टर। स्ट्रैटिफिकेशन में लेस एरर कंपेयर टू सिंपल रैंडम, हियर मोर एरर कंपेयर टू सिंपल रैंडम। यहाँ पे डबल आपको सैंपल लेना है। मोर एक्सपेंसिव, दिस वन इज टू ऑब्टेन द स्ट्रैटिफिकेशन इंफॉर्मेशन बिफोर सैम्पलिंग, एंड लेस एक्सपेंसिव एज सैंपल ओनली सम एरिया। आपको एरिया से भी करना है, बाकी ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं। क्लस्टर इस डाटा में आपको उनका एज मैच होता है कि नहीं, उनका जेंडर मैच हो रहा है कि नहीं, उनके रेसेस मैच हो रही कि नहीं, ये सब देखना पड़ता है, इसलिए मोर एक्सपेंसिव होता है डाटा। Design effect. What is my design effect? This is your population having the different kinds of person in your population basically. Okay. When you apply the simple random sampling, then you find your sample like this. Some are blue, some are different person in your sample. Okay, but when you go for the stratified, what is the difference between simple random and stratified? Please see. When you go for stratified sampling, then your every group having same kind of person or same kind of sample. This is the basic difference of simple random and stratified sampling. Understand? Okay. Please mute your mic. Okay. Next one is cluster. What is the effect of cluster? First of all, you see the design effect of stratified. In each strata, you are having the same kinds of person. Okay. But in case of cluster, see, in case of cluster, there are again same effect of simple random. Because first of all, we select the cluster according to their area or
zone or geographical conditions, and then again we select from that area or zone by simple random or systematic random. That's why effect of means design effect of the simple random is equal to design effect of cluster sampling. This is the basic difference of that two systems. Then fifth one is multi-stage. नाम से पता चलता है multi-stage. मैंने लिखा large country means when we will go for the large type of survey. In that case, we will use multi-stage sampling. For example, first stage, preparation of the large size sampling unit, randomly selected a certain number, and second stage, another list prepared from the subsample drawn by the random sampling. Subsample आपको निकालना है by random sampling. For example, please mute. Hello. Okay. Multi-stage sampling, for example, you wish to survey in overall the country, but practically it is not possible to visit each and every person. That's why, first of all, you select the country, for example, India, then provinces from that country, then in provinces, we select them cities. In cities, we select district, which we have, then household, and then from that person. Likewise, this is a step ladder pattern in multi-stage sampling. Very easy. Multiphase. Multiphase sampling is also called as sample within sample. Sample within sample. Because when we find that some information is very expensive, some investigation, some information is very expensive for doing that. In that case, we will go for multiphase. For example, history of a cough and fever, Montauk test and chest X-ray. We just observe when patient complaining cough more than 21 days, then we think for Montauk. Okay. And after that confirmation of that Montauk, we think for X-ray. After that, MRI, etc., etc. But this is not our subject. Multi-stage sampling. First of all, symptom of cough more than 21 days. Okay, first of all selected. Then those patients having the Montauk's positive, those patients only allowed to sputum positive, and after that X-ray, after that CT scan, whatever maybe. Okay, so such type of design comes under the multi-phase sampling. It is also called as sample within sample, or what is the exact use when your diagnostic criteria is very expensive. Second one is non-probability sampling. Non-probability, that is non-random. It is also called as purposive sampling. Okay. Probability of being a chosen is unknown. Unable to generalize, जैसे हमने देखा था, and potential for bias. Use when researcher lack a sampling frame. जब researcher के पास sampling frame ही नहीं होती है, मतलब readily available name नहीं होते. For example, आप ओपीडी में बैठे, ओके, आपको पता ही नहीं कि कौन सा पेशेंट आएगा, आपके पास लिस्ट है क्या पेशेंट की? नहीं. रेडीली अवेलेबल है क्या? नहीं. तो ऐसे वक्त इसलिए हम पीजी स्टूडेंट के थीसिस के लिए और पीएचडी थीसिस के लिए भी मोस्टली हम क्या करते हैं, ऐसे वक्त हम मोस्टली पर्पसिव सैंपलिंग यूज करते हैं और कोटा सैंपलिंग. ओके, पर्पसिव सैंपलिंग. फॉर एग्जांपल, जैसे ओपीडी के दिन होते हैं, ओके, मंडे है, बाद में थर्सडे है, लाइक दैट. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मंडे को आने वाले ट्रायल में और थर्सडे को जो आएंगे वो कंट्रोल में. तो ये जो टाइप है, ये टाइप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में नहीं जाता है. ओके, इसलिए आपको याद रखना है कि जहां पर रेडीली अवेलेबल नहीं है हमारे पास लिस्ट,
ऐसे ही टाइप सिर्फ इधर आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में। आपको पता ही नहीं ना कौन सा पेशेंट आएगा, रिस्क थोड़ी। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको कफ का पेशेंट चाहिए, ओके, तो आप वो आया, आपकी स्क्रीनिंग करेंगे, अगर आपके क्राइटेरिया में बैठा तो फिर उसको अलोकेट करेंगे आप, है ना, वेदर फॉर ट्रायल और कंट्रोल। दिस इज अनदर थिंग, एलोकेशन। ओके, non-probability sampling. First one is convenience, second is quota, third is purposive, and fourth is snowball. Convenience, quota, purposive, snowball sampling. We will see one by one. First, convenience means ease of access, एकदम easy होती है, easy to accessible. आपकी convenience के हिसाब से you can select sample, very easy. Second is quota. Quota sampling means, for example, you enroll the patient in your group until your quota will not be completed. For example, this is the patient of Prakriti, and first of all we divided our Prakriti into 3 Vata Pitta Kapha and taking a 30% for each Prakriti. अगर मैंने पहले डिसाइड किया है कि मुझे वात पित्त कफ के 30 लेना है, तो that type of sampling is called quota sampling. Okay, आपका कोटा कंप्लीट होने तक आपको लेना है, स्क्रीनिंग करना है, तब तक आपको पूरा रिकॉर्ड रखना है स्क्रीनिंग का, कि हो सकता है कि वात के लिए आपको स्क्रीनिंग करना पड़े 50 पेशेंट, पित्त के लिए 70 या कफ के लिए 100 भी लग सकते हैं। वो भी रिकॉर्ड रखना है कि मैंने इतनी स्क्रीनिंग की, नहीं मिले, और नहीं मिला तो इधर जाएगा, यहाँ से 50 में इधर जाएगा, कहीं तो जाएगा, करेक्ट। तो हम ऐसे जब कोटा फुलफिल करने के लिए करते हैं तो उसको कोटा सैम्पलिंग कहते हैं, filling the quota. Okay, purposive, that is judgmental, it's also called a judgmental sampling. You choose who you think should be in your study. आपको क्या लगता है कौन आपके स्टडी में होना चाहिए, वो आप ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू शो द लिटरेसी रेट in India, okay, has increased if sample from urban area, if sample chosen from urban area. तो आपका पर्पस ही रॉन्ग था, आपको लिटरेसी रेट चेक करना था तो आपने अर्बन के साथ साथ रूरल एरिया भी लेना चाहिए था, राइट. पर्पस यू, तो इट्स कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग आल्सो. फोर्थ वन इज स्नोबॉल सैम्पलिंग. इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रेंड टू फ्रेंड सैम्पलिंग. फ्रेंड टू फ्रेंड क्यों बोला? बिकॉज व्हेन द डिजायर्ड सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेयर, मतलब जो रेयर डिसीज होते हैं, खास करके एसटीडी या ऑटोइम्यून डिसीज भी है, सम ऑटोइम्यून डिसीज, एसटीडी डिसीज, it may be extremely difficulty to find out easily in our society, or patient do not come directly in the college OPD or in OPD. Okay, in such a condition we will go for snowball sampling, because here friend of that patient refer from initial subject to further subject. Okay, for example, STD diseases, इनकी एक गैंग होती है, गैंग. ओके, गैंग तो ये एक दूसरे कांटेक्ट में होते हैं, इनको सेम प्रॉब्लम होते हैं ना, खास करके रेयर डिसीजेस, तो एक दूसरे कांटेक्ट में होते हैं. वो डॉक्टर के कांटेक्ट में उतने नहीं होते. तो एक से दूसरा, दूसरे तीसरा हम जब पहुंचते हैं और हमारी सैम्पलिंग कंप्लीट करते हैं, इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग. जैसे वो जो आइस का बॉल होता है, ऊपर से जब निकलता है छोटा होता है, फिर नीचे आता है तो उसको बर्फ लगते लगते बड़ा बड़ा हो जाता है. दिस कॉन्सेप्ट इज यूजिंग हियर स्नोबॉल सैम्पलिंग. Our next part of this session is sample size. Sample size. Why sample size calculation is important? Okay, number one, for required the precision. Precision मतलब near to accuracy. Okay, to provide the adequate statistical power, representativeness of population, or to avoid the extra resources. Extra resources in terms of टाइम, मनी और सैंपल, मतलब पर्सन, एक्स्ट्रा कोई नहीं लगना चाहिए. डिस्क्रिप्शन ऑफ सम कॉमन यूज टर्म्स.
ये कुछ कॉमन यूज टर्म्स होती है, अगर आपको सैंपल साइज समझना है तो उसके पहले टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए थी। इसमें सभी टर्म्स मैंने पिछले संडे के लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, सभी टर्म टोटल मुझे पता था अगले संडे को लगेंगी। तो आज हम उसको जस्ट ओवरलुक करते हैं या जस्ट स्लाइड पलटा के आपको बता दो एक एक वर्ड और हम आगे चलते हैं। ओके, ये सभी टर्म्स हमको चाहिए। नंबर 1, रैंडम एरर। ओके, रैंडम एरर मीन्स इट डिस्क्राइब द रोल ऑफ चांस। रैंडम है ना, बाय चांस। तो सोर्सेस ऑफ रैंडम एरर इंक्लूड्स, फर्स्ट वन इज सैम्पलिंग। ओके, सेकंड सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफरेंस हो सकता है, और या मेजरमेंट एरर हो सकता है। सोर्सेस कहाँ से आते हैं, ये रैंडमली। इट कैन बी कंट्रोल्ड, आप ये कंट्रोल कर सकते हैं, यस इट कैन बी कंट्रोल्ड और रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग सैंपल साइज, सिंपल, क्योंकि पढ़ना ही वही है, या फिर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट रिपीट करना तो मुश्किल है, दैट्स व्हाई वी विल फोकस ऑन इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। बट एग्जैक्टली हाउ मच सैंपल साइज वी विल इंक्रीज फॉर perfection or to avoid the random error. Otherwise, if you think you need 50 sample and you will take a 500 sample for your study, that is, you take 450 people for your trial. This is not ethical. It is totally unethical trial. Okay. Second one is systematic error. It describes the deviation that are not the consequences of the chance. मतलब ये चांस के हिसाब से नहीं आता है, ये आपके स्टडी का पार्ट होता है सिस्टमैटिक एरर। ओके, इट कैन बी रिड्यूस बाय द गुड डिजाइन एंड कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। गुड डिजाइन अगर आपकी है तो आप सिस्टमैटिक एरर कम कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन सैंपल साइज। थर्ड कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी, दैट इज वैलिडिटी। इट इंडिकेट द डिग्री टू व्हिच द वेरिएबल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स व्हाट इज सपोज्ड टू रिप्रेजेंट। वही आपको रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल जो आपको दिखाना है। इट इज अ फंक्शन ऑफ सिस्टमैटिक एरर। मैंने पहले कहा था, द ग्रेटर द एरर लेसर द एक्यूरेट ऑफ द वेरिएबल्स। सेकंड वन इज नल हाइपोथेसिस। यहां से आपको याद है पूरा, जस्ट मैं फर्स्ट जाता हूं। दिस हाइपोथेसिस नीड टू बी टेस्टेड। आपको पता है हम नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते, राइट? देयर इज नो डिफरेंस अमंग द ग्रुप्स और दैट देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द drug A and drug B, like that. Alternative. There are two types of alternative. Okay. Which one? One tail and two tail. हमने एग्जांपल दिया था पिछले संडे में, हाइट ऑफ पंजाब पीपल और महाराष्ट्र पीपल। जब हम ये देखना चाहते हैं कि पंजाब के पीपल की हाइट ज्यादा है, पता है हमें कितनी ज्यादा है, दैट इज वन टेल। और जब बेसिक स्टडी करना चाहते हैं कि हाइट ऑफ पंजाब पीपल are more or less, है ना? Or we can say that height of Punjab people and Maharashtra people are equal, है ना? Assume this type of hypothesis called two-tail hypothesis. Means we can simply say that there is no difference between the height of Punjab people and Maharashtra people. Okay, there is two-tail hypothesis. Okay. और हमने एक देखा था कि वन टेल दैट इज वन डायरेक्शन और टू टेल दैट इज अदर डायरेक्शन। देयर इज नॉर्मल कर्व, इसको हमने पूरा याद किया था पिछले संडे। कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल मींस होप ऑफ एक्सपेक्टेशन। आपको अगर याद आ रहा होगा कुछ तो ये नॉर्मल कर्व था पिछले संडे का, है ना? और हमने कॉन्फिडेंस लेवल 95 यहाँ पे अज्यूम की थी, है ना? दैट इज 1 माइनस अल्फा। ओके, कॉन्फिडेंस लेवल 1 माइनस अल्फा। भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मींस एरिया ऑफ रिजेक्शन, अल्फा एरिया, पी एरिया, मैंने नाम दिए अलग अलग। क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस याद है कुछ? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज लो वी से इट इज रेयर, मींस सिग्निफिकेंट। हमने यही किया था इक्वेशन क्या, रेयर, सिग्निफिकेंट, नॉट रेयर, नॉट सिग्निफिकेंट। सिंपल। रेयर मींस less than 0.05 for example, just that is significant. Simple.
Next one. Level of significance में हमने दो जो पॉइंट देखे थे, रेयर इवेंट, सिग्निफिकेंट, नॉट रेयर इवेंट, दैट इज कॉमन इवेंट, नॉट सिग्निफिकेंट. हमने एक एग्जांपल भी लिया था, आपको याद आ रहा सबको, कि हम जब भी बोलते मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हम ऐसी बात नहीं करते स्टार्ट में. मेरी फेल होने की प्रोबेबिलिटी लेस देन 5% है. That is, probability of passing is more than 95. Means more than 95% confidence level. And at the same time, when actually you occurs like that, when your the failing capacity is less than 0.05, p-value is less than 0.05, at the same time you reject your null hypothesis. Okay, what is your null hypothesis? Feeling, yeah, I cannot pass, or I cannot clear that exam, like that, your null hypothesis. And alternative is I clear that exam. Okay, the p-value at which we regard an event or outcome as significant level. Next one is p-value and its wording. ये भी मैंने लिया था, उसको क्या क्या कहते हैं? Meaning of p within 95% confidence limit. Okay, अगर इसके पहले होता है तो we can say that up to 95. This is normal curve, and this is the area of 95 complete area. Okay, when your result put or your result fall in this area, we can say that this result may becomes by chance. But when your result beyond that area comes under beyond that area and comes under the rejection area, after that we can say that this is not by chance. For this phenomena, there is some chance, there is some reason. What is that? That is our study, that is our drug, that is our whatever may be. Okay, that is our exercise, that is our control, maybe. Type 1 and type 2 error. This is chart. Type 1, type 2 error ka null hypothesis rejected. Okay, when it is false, there is no error. Rejected null hypothesis when true, that is type 1 error. Null hypothesis accepted when true, no error again, and accepted but false, that is type 2 error. Okay, type 1 type 2 error हमने पिछले समय बहुत डिटेल में लिया था, बहुत ज्यादा. तो अब उसको डिटेल में ना जाते हुए यहाँ पे देख लेते 4 सेंटेंस पे, आपको याद आ जाएगा सब. Null hypothesis rejected when it is true. Okay. That is alpha, type 1 error. Alpha error value is 5%, acceptable up to 10%. Very good. Second, level of confidence कैसे समझना? Level of significance मतलब कौन सा हो गया? ये अगेन आपका नॉर्मल कर्व. तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वाला एरिया कौन सा है? देखिए, ये नॉर्मल कर्व. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वाला एरिया मतलब ये रिजेक्शन वाला एरिया. लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वाला एरिया मतलब ये 95% वाला, because 95% is universal value, na? That's why we assume 95%. When null hypothesis accepted when it is true, accepted, true. Okay, it is shown by 1 minus alpha, and level of significance is shown by alpha, 5%. Okay. Third one is level of type 2 error. Type 2 error means null hypothesis accepted when it is false, that is beta error. Okay, beta error. And last one is power of study, means null hypothesis rejected when it is false, means this is no error. This sentence is having no error because you reject your null hypothesis. But when actually it is when it is false, means you have to power, you have to minimum 80% power. How many power? Minimum 80% power to reject your null hypothesis. Okay. Less than 80% power, you cannot reject your null hypothesis. That's why
in complete procedure of drawing the sample size or calculating the sample size, we assume, we assume our power of study should be minimum 80%. You can take 90%, no doubt. You can take 95%, but minimum acceptable range start from 80%. Clear? This is 1 by beta, power of study. Next, what is the actual meaning of power of study? Just we look here. Power of statistical stress can be increased by the increased number of subject, reducing the P, increasing sensitivity. Sensitivity कल explain की थी. Power of statistical stress is also used for calculation of sample size. ये भी मैंने अभी बताया. क्या के लिए use करते हैं? कि sample से calculation के लिए. Okay. 1 by 1 minus beta. तो हमने पहले कहा कि पावर मतलब क्या? This is the probability that the test will correctly identify a significant difference or effect of association in the sample that exist in the population. मतलब जो difference है, जो आपने दिखाया, वो है मतलब है, population में भी है. आपके sample में जो difference आया, वही sample, वही आपके sample में जो difference आया, actually वो difference population में है, इसीलिए आपके sample में आया. ये आपने कितने % पावर से बताया? 80% पावर. Okay, very good. Next one is some values of type 1 error and alpha beta. Type 1 is alpha 5, confidence interval 95, Z value is 1.96. On the other hand, 1 minus beta, that is power of study, P value is 10%. In 10% Z beta, मतलब Z की beta value is 1.281. Okay, likewise, it is very useful for the calculation. Just remember 1.96 for alpha at 5% alpha level or level of significance and 95% confidence interval. Okay, डिजाइन इफेक्ट. अभी हमने देखा था डिजाइन इफेक्ट. आपने देखा सिंपल रैंडम में अलग डिजाइन इफेक्ट था, राइट, और स्ट्रैटिफाइड में अलग था, क्लस्टर में अलग था. तो डिजाइन इफेक्ट बोलते हैं इसको. डिजाइन इफेक्ट का क्या रोल, क्या है एक्चुअली, रोल क्या है ये हमको देखना. अगर आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है तो आपको जो सैंपल है वो कंपैरेटिवली कम लगेंगे सिंपल रैंडम में. आप बोलेंगे सर क्लस्टर में भी तो सेम ही आए थे. मतलब जो डायग्राम आपने देखी, जो सिंपल रैंडम में जैसे सैंपल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पॉपुलेशन, वैसे ही क्लस्टर में भी थे, करेक्ट. लेकिन क्लस्टर में ग्रुप बढ़ने से, जो क्लस्टर ज्यादा होते हैं ना, क्लस्टर्स में ग्रुप बढ़ने से आपको सैंपल साइज भी ज्यादा लेनी पड़ती. बाय द वे, मल्टीप्लाइड बाय द डिजाइन इफेक्ट. डिजाइन इफेक्ट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. थर्ड पोर्शन and last portion of this today's session is sample size hands-on session. Okay, and just take water and continue this hands-on session. Okay. सैंपल साइज मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि जैसे मैंने पढ़ाया तो आप एकदम सैंपल साइज कैलकुलेट करो, लेकिन अगर आप ओपन ई पे यूज करेंगे तो आप सैंपल साइज कैलकुलेट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं सैंपल साइज के लिए. जैसे एक एस्टिमेशन होता है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है. ये दो बेसिक क्राइटेरिया होते हैं, एकदम बेसिक. एस्टिमेशन मींस जहां पर हमें क्वालिटेटिव डाटा होता है, बेसिकली वहां पे हम एस्टिमेट करते हैं, और जहां क्वांटिटेटिव डाटा होता है वहां पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं. आपको याद होगा स्टडी डिजाइन जो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव.
there are two types of study design. Okay, and then quantitative study design divided into two types. Which two types? मैं मेरा कैमरा ऑन करता हूँ क्योंकि मैंने अभी लैपटॉप सीधा कर दिया है ना. एक सेकंड, तभी बात होगी आपसे. ओके, तो स्टैटिस्टिकल में एस्टिमेशन और ये हमने वहां पे देखा था क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव को हमने अगेन डिवाइड किया था दो में, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल. Observational again divided into two types, descriptive and analytical, and third one is experimental. So this descriptive study design is hypothesis generative study, right? And analytical studies are hypothesis testing, and experimental are hypothesis confirmative studies. On that basis, inferences drawn basically two types, estimation and hypothesis testing. For estimation, we will use incidence, prevalence, proportion, mean, and SD. And hypothesis testing के लिए we will use only mean and sometime proportion, but not mostly. Okay. So एक second. इतना स्मॉल नहीं हो रहा है. ठीक है, इसको नीचे डाल देता हूँ. ओके, practical issues in calculating sample size. फर्स्ट इशू, जब भी हम सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं तो एक चीज याद रखना है कि जो आपका प्राइमरी आउटकम है उसी बेस के आधार पर सैंपल साइज कैलकुलेट करनी चाहिए. प्राइमरी आउटकम मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. आपका ऑब्जेक्टिव होते हैं ना प्राइमरी सेकेंडरी, तो जो भी हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा स्टडी का उसी के बेसिस पे हमने सैंपल साइज कैलकुलेट करना चाहिए पहला. लेकिन सेकंड रूल ये भी है कि आपको जितने भी आपके आउटकम है, ईच एंड एवरी आउटकम यू हैव टू कैलकुलेट द सैंपल साइज फॉर ईच एंड एवरी आउटकम एंड देन डिसाइड हाईएस्ट सैंपल साइज फ्रॉम मतलब फॉर व्हिच आउटकम इज देयर एंड टेक दिस सैंपल साइज मतलब व्हिच इज हाईएस्ट वन. सेकंड इशू इज आल्सो देयर. ओके, आफ्टर दैट ड्रॉप आउट. सेकंड इशू ड्रॉप आउट. हम जब भी सैंपल साइज लेते हैं okay, तो वहां पे कुछ ड्रॉप आउट्स होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द स्टडी डिजाइन एंड subject or disease patiently. Subject who are enrolled but in whom outcome status cannot be ascertained do not count in your sample size. Okay, so sample size में count नहीं करना है. Anticipating the dropout rate, sample size can be calculated. You just imagine your 10% or 20% samples are dropped out or miss the follow. We call that attrition bias, loss of follow. In case of loss of follow, we have to ready for that also. That's why for clinical trial we will take 10% or 20% extra sample. Okay. Second, कुछ basic concept है. Samples is calculated on the basis of outcome. I already told you on the basis of outcome. For example, when there is a qualitative, we see yes no type data, or quantitative, that is continuous type of outcome. First of all, you think, क्योंकि देखो जितने भी लोग सैंपल साइज निकालते हैं बेसिकली हम सिर्फ डैनियल फार्मूला एक पता होता है, तो कोई भी स्टडी का सैंपल साइज डैनियल फार्मूला से निकालते हैं, ऐसा नहीं करना है, वो एक्चुअली टोटली रॉन्ग है. ठीक है, तो पहले हमको ये इमेजिन करना है
कि हमारा आउटकम वेदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आउटकम. देन स्पेशली कंसीडर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. मैंने अभी भी बताया स्पेशली प्राइमरी के ऊपर हम जा सकते हैं. आइडियली कैलकुलेट फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हिच वन इज हायर टेक इनटू कंसीडरेशन. ये अगेन सेकंड रूल है, बट आपने ये रूल नहीं भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना इमरजेंसी नहीं. व्हेन प्रीवैलेंस इज नॉट गिवन, अब बहुत लोग बोलते हैं प्रीवैलेंस नहीं दिया है या कुछ डाटा अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे वक्त अगर हमें सैंपल से निकालना है तो कैसे करें? कुछ ऑप्शन अवेलेबल है उसके लिए. नंबर 1, डू पायलट स्टडी. लेकिन पायलट स्टडी के लिए भी आपको इथिक्स कमेटी की परमिशन जरूरी है, भूलना मत. यूज 50% ऑफ द केसेस सिनेरियो. जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी डिसीज 50% अज्यूम कर सकते हैं आप, अगर उसका अवेलेबल नहीं कोई भी डाटा, तो on the basis of 50% you can go for a sample size calculation. Third one is calculate the hospital based sample size. आप जिस हॉस्पिटल में जिस एरिया में काम करते हो, ओके, तो हॉस्पिटल बेस आप सैंपल साइज निकाल सकते हो कि लास्ट ईयर है ना, ओके, पर्टिकुलर डिजीज के आपके पास कितने पेशेंट्स आए थे, तो आपका स्टडी कितने साल का है, तो उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि इतने पेशेंट आएंगे, इतना ड्रॉप आउट होगा, तो हम इतने ले सकते हैं, लाइक दैट. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अल्फा एरर. अल्फा एरर कितना होता है? 5%. एग्जैक्टली, सभी को याद ही होना चाहिए अभी, है ना. एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ अल्फा एरर 5 to 10%. अल्फा एरर कहाँ से आया? यहाँ से आया, ये नॉर्मल कर्व, और ये जो एरिया ऑफ रिजेक्शन था यहाँ से आया अल्फा एरर. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोड्यूसिबिलिटी. नहीं, एक मिनट, ये चेंज हो गया. हाँ, यहाँ पे निकालना था मैं डायग्राम सीधा किया अभी लैपटॉप, इसलिए तो तकलीफ जा रही है. ओके, अल्फा एरर that is 5% from here. Okay, acceptable range 5 to 10%. Level of significance, also called as level of significance. P, we will see. No, we already seen that P less than 0.05 we called as type 1 error. Okay. Second concept is confidence interval, that is CL, confidence level or confidence interval. This one area. Okay, we called as 1 minus alpha, and on which confidence level? At 95%, because it is universally accepted confidence level. Okay. Then this equation is very important. इस इक्वेशन से हम ये बता सकते हैं कि आपने जो सैंपल लिया वो आपके जो पॉपुलेशन आपका था उसी से आपने लिया या नहीं लिया. तो मीन प्लस माइनस 1.96 multiplied by AC. AC means standard error. Okay, AC means standard error. What is the difference between standard deviation and standard error? Standard deviation is for only one group, and when we calculate AC from SD, okay, मतलब ऐसे अगर हमारा 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप का हम स्टडी कर रहे हैं, तो 3 ग्रुप का आपके पास मीन और एसडी होगा, मीन एसडी, मीन एसडी, मीन एसडी. और ये जो 3 एसडी है, इस 3 एसडी को यूज करके हम एसी निकालते हैं स्टैंडर्ड एरर, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर पॉपुलेशन का होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का होता है ना. जैसे पैरामीटर पॉपुलेशन का होता है, स्टैटिस्टिक सैंपल का होता है, लाइक दैट. और ये जो है प्रिसीजन, व्हाट इज प्रिसीजन? एग्जैक्टली प्रिसीजन बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि 1.96 क्या है? Z वैल्यू है, सीधी Z वैल्यू एट 95% interval, right? 95% confidence level. Z value is 1.96. 1.96 multiplied by SE is equal to precision. Simple. Clear? Mean. For example, आपने एक हाइट का प्रैक्टिकल किया कि आपके क्लास की ऑन एन एवरेज हाइट कितनी है, तो आपको हाइट का मीन मिला 150 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, प्लस माइनस ये जो 1.96 इसको हम 2 पकड़ते फिलहाल, राउंड फिगर कैलकुलेशन के लिए 2, और आपका स्टैंडर्ड एरर जो आपको मिला जो कैलकुलेशन के बाद आपने देखा वो था 5. ओके, जस्ट कैलकुलेट 150 प्लस माइनस 10 मीन्स आपके क्लास की जो भी रेंज होंगी, ईच एंड एवरी पर्सन हैविंग द रेंज बिटवीन 140 to 160 सेंटीमीटर कंपल्सरी.
अगर एक आधा बच्चा आया, उसको आपने हाइट ली, उसने आपने उसकी हाइट ली और उसकी हाइट अगर है 142, तो आप बता सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये आपके क्लास का नहीं है। ओके, ये आप बता सकते हैं बिल्कुल बिंदास। Okay, next one is more about precision. Precision, I told you 5% absolute. What is the absolute? This is again one more important concept. One is the absolute precision and second one is relative precision. ये भी मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे समझना। इसके acceptable range देख लो पहले, 20%. Acceptable range is 20% precision की. For example, मुझे अगर आपको बताना है तो 20 है, ओके, 20% का अगर मैंने 5% एब्सोल्यूट प्रिसिजन लिया तो कितना आता है? एब्सोल्यूट लिया मतलब 100 में से 20, ओके, 100 में से 5 तो 20 में से कितना हुआ? 1, राइट? एब्सोल्यूट लिया ना, कंबाइन लिया तो कितना हुआ? प्लस माइनस 1 हुआ ना। तो 19 to 21, तो रेंज कितनी हुई? 19 to 21 फॉर एब्सोल्यूट प्रिसिजन। बट अगर मैं इसको रिलेटिव प्रिसिजन लेता हूँ, रिलेटिव प्रिसिजन अगर लेते हैं तो ये आता है 5। रिलेटिव प्रिसिजन कितना आएगा कि 100 में से 100 में से 5 और 20 में से कितना, मतलब रिलेटिव हम 20 जो हमारा प्रीवैलेंस था, तो 20 प्रीवैलेंस का रिलेटिव निकाला हमने। देखिए दोबारा समझाता हूँ, आपका प्रीवैलेंस है 20, ओके। अब यहाँ पे दो आइडिया आप कर सकते हैं, एक तो एब्सोल्यूट प्रीवैलेंस लो, मतलब एब्सोल्यूट प्रीवैलेंस का डी लो, दैट इज प्रिसिजन लो, या फिर रिलेटिव प्रिसिजन लो। आपका प्रीवैलेंस फिक्स है 20, जैसे आप एब्सोल्यूट लेते हो 5% तो आपकी रेंज ऐसी आती है 19 to 20 और आपको एक्सेप्ट है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन जब आप रिलेटिव रेंज लेते हो इसकी, ओके, सॉरी, एब्सोल्यूट रेंज 19 नहीं, एब्सोल्यूट रेंज आएंगी 15 to 25, एब्सोल्यूट है ना, और जब रिलेटिव लेते हो मतलब 20 की, तो ये आएंगे 21 रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिवली कितना है, क्योंकि ये जो 20% है इसको आप 100% मानेंगे और इसको 100% मानकर फिर आप उसका 5% निकालेंगे, तो ये रिलेटिव होती है। इसीलिए कभी भी हम रिलेटिव प्रिसिजन नहीं लेते हैं। लेकिन जब आपका प्रीवैलेंस 2, 3 या 5 के अंदर है, तब बहुत मुश्किल होती है सैंपल साइज निकालने में, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरा प्रीवैलेंस 2 है और मेरा एरर 5% है ना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। ओके, प्रिसिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड एरर, also called as reliability, repeatability, reproducibility, stability, consistency, or for only understanding purpose, we can assume it is some type of error. Okay, because see here 1.96 multiplied by AC, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू AC है प्रिसिजन। ओके, नेक्स्ट ये देखो, रिलेटिव D, relative precision, absolute precision, well, aggregate percentage of the mean out of 100, and relative means 20% of the prevalence, then calculate from 100. For example, prevalence 28% है, okay, आपका आपने जो लिया प्रिसिजन हो लिया 5%, ओके, तो कितना हुआ आपका एरर? 23 to 33। लेकिन अगर आपका प्रीवैलेंस 3% है तो इस केस में आप 5% प्रिसिजन नहीं ले सकते, इस वक्त आपको रिलेटिव प्रिसिजन लेना पड़ता है। ओके, नहीं तो आपका रेंज आएंगे -2 to 8, जो नॉट अलाउ नहीं है क्योंकि बायोलॉजिकल रेंज में नहीं बैठे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बीटा एरर अलाउएबल 20% जो फिक्स होता है, पावर ऑफ स्टडी 80% पे हम फिक्स करते हैं, साइडेड 2 टेल स्टडी यूज करते हैं, क्योंकि 1 टेल स्टडी मोस्ट ऑफ द जर्नल आर नॉट एक्सेप्टेड 1 टेल स्टडी, दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर 2 टेल स्टडी। मतलब वही अगेन पंजाब और महाराष्ट्र का एग्जांपल, ठीक है, 2 टेल, P इज इक्वल टू 1, अगर प्रोपोर्शन 1 है या प्रोबेबिलिटी 1 है तो Q मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 है तो अनसक्सेस की कितनी है?
Q is equal to 1 minus P. Q complete probability is 1. Okay, complete is 1. That is event of success. And Q is complete minus P, जो भी होगा, like that. Confidence interval. How to calculate? Mean plus minus 1.96 AC. And I already discussed about same equation. And what is my AC? So AC is equal to SD divided by under root N. This is the formula of AC. We just replace AC in term of SD. And on the basis of this formula, we can calculate the sample size. N is equal to. On next slide. Like that. If we have proportion, means prevalence, then this is the estimation, this formula for estimation, very easy. This formula is called Daniel formula. Please remember single formula, first of all. N is equal to Z square PQ divided by D square. D is precision. Okay. Z value, alpha value in Z table is 1.96. Correct? 1.96, no? But here we just assume for 2 for the easy calculation. Okay. Otherwise 1.96 square is equal to 3.84. Okay. Z square PQ divided by D square. Then if we have SD or AC, then what can we do? First of all, we have prevalence. We can use this formula, very easy. But in another cases, we have SD or AC. Then what can we do? In that case, 1.98 is equal to AC. That is 2 AC. Just round figure this 1.96 for calculation. AC formula under root PQ divided by N for qualitative. That is single proportion अगर है तो PQ means proportion success और unsuccess rate होता है ना, इसलिए formula use किया. But at the same time अगर quantitative है और single mean use करना है तो हम AC की जगह ESD वाला formula use करेंगे. कौन सा मैं दिखाता हूं आपको, ये वाला, ये देखिए ये वाला, और इसको हमने फिर कन्वर्ट किया तो आपको ऐसा दिख रहा 2 ESD divided by under root EN. Sorry, 2 square ESD square divided by N. ये उसको कन्वर्ट किया तब. क्लियर? और जब n निकालना है तो n इधर लेके आए, n is equal to 2 square SD square divided by D square. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगर करना है तो कंटिन्यूस डाटा रिक्वायर्ड मीन एंड क्वालिटेटिव डाटा रिक्वायर Z alpha, Z beta, P1, P2 और precision like that. Sample size for cross sectional survey. क्रॉस सेक्शनल सर्वे करना है आपको. सिंगल ग्रुप है. When provide the proportion or prevalence and your study is qualitative, just survey. Okay, here outcome is most of the time binary, means yes, no type, success, unsuccess type, your outcome. Go for this formula, basic formula, or this is called as basic formula, Daniel formula. Z square PQ divided by D square. Very easy. And when your study is quantitative, and your old paper or review literature provides some mean or SD like material. Okay, and basic rule, don't forget, your outcome is continuous. Your study is quantitative, the quantitative type of data, and your outcome is continuous. This is the basic criteria. Here your outcome is binary. Here continuous. In that case, just use same formula, but your study is quantitative or your outcome is continuous and you have mean and SD for calculation. That's why go for this formula. 2 square SD square divided by D square. Simple. We will see on software also. This is one example. The prevalence of the anemia among the pregnant women is 60%. Let us assume the precision to be 5%. How many subjects are needed to be studied taking the 95% confidence interval? For example, N is equal to, this is our formula, basic formula, because 60% and prevalence is provided, that is your study is qualitative type of study. That's why we go for this formula. Expected proportion of the pregnant women
60%, दैट इज 0.6% में अगर करते हैं, मतलब 1 में अगर कन्वर्ट करते तो 0.6, नो प्रॉब्लम, 60%. And absolute precision 5%, that is range is 55 to 65, not important, we will see one by one. When provide the proportion provide किया तो formula same है, बात करने की जरूरत नहीं. Next, the success rate of the paralysis, see here, success rate of paralysis was reported as 60% in the literature. Okay, and Ayurveda offer equivalent success. Okay, how many patients must be studied to take equivalent? We can say that equivalent, not correct word. Ayurveda offer more than 60% success. That is, we can assume कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से 70% अज्यूम कर रहे हैं, मतलब P हो गया आपका 0.7 या 70%, करेक्ट, जो आपने अज्यूम किया है. एट द लेवल ऑफ 0.05, पावर 80%, जो फिक्स है, उसको बदलेंगे नहीं कभी भी. ओके, प्रपोर्शन ऑफ द सक्सेस 10 पॉइंट्स ग्रेटर. कितना सक्सेस चाहिए हमको, हमने कितना अज्यूम किया, 10 पॉइंट ग्रेटर देन द प्रीवियस ट्रीटमेंट. दैट्स व्हाई हियर P1 इज 60%. P1 कितना था आपका 60. आपने कितना अज्यूम किया, P2 70%. 10% आप चाहते हैं कि आपके ट्रीटमेंट अच्छे होंगे, बेटर होंगे, तो एस्टिमेटेड रिस्क फैक्टर इज P1 माइनस P2 इज 0.1, क्योंकि 10% एस्टिमेट फैक्टर हुआ, जो डिफरेंस है. ओके, एंड पॉपुलेशन रिस्क फैक्टर इज 0.05 on CI 95%. Okay, basic sample size rule using the proportion, ये जरूरत नहीं. आप अभी ओपन करिए आपका ओपन ईपी सॉफ्टवेयर. ओके, ओपन ईपी सॉफ्टवेयर जैसे आप ओपन करेंगे, सॉफ्टवेयर नहीं बेसिकली साइट है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा अनमैच्ड सीसी. अब देखिए अनमैच्ड सीसी सैंपल साइज दिया है यहाँ पर. लेफ्ट हैंड साइड पे सैंपल साइज का एक कॉलम है, उसको हम यूज करेंगे, आगे जाएंगे. सबसे पहले सीसी फॉर केस कंट्रोल. तो केस कंट्रोल के लिए ऑलमोस्ट सभी डाटा अवेलेबल होता है, हमको सिर्फ 2 डाटा फिलअप करना होता है. नंबर 1, परसेंट ऑफ कंट्रोल एक्सपोज. जो भी कंट्रोल ग्रुप में थे, केस कंट्रोल स्टडी की बात करो, पहला हो गया आपका एस्टिमेशन हो गया और प्रीवैलेंस हो गया. ओके, मतलब एस्टिमेशन भी हो गया, अगर क्वालिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव, वन टाइप वन ग्रुप स्टडी है तो क्या करना. पर पेशेंस टाइप ऑफ स्टडी है, सर्वे मेथड नहीं है, केस कंट्रोल है, तो स्टडी डिसीजन कैसे निकालना. परसेंट ऑफ कंट्रोल एक्सपोज, ऐसे कंट्रोल जो एक्सपोज तो हुए हैं, किसके लिए एक्सपोज हुए, किसके लिए एक्सपोज हुए, कॉज, राइट, कॉज टू इफेक्ट स्टडी है ना. तो जो कॉज के लिए एक्सपोज हुए हैं लेकिन अभी तक उनको डिसीज नहीं हुआ है, ऐसे कितने परसेंट बंदे इसका डाटा आपको अवेलेबल हो जाता है, 9%, 40%. एंड यू हैव जस्ट अज्यूम what is the odds ratio of exposed and also having the disease. Just imagine 3 times greater the risk of those patients who expose in trial group or in control in case group. Okay, odds ratio 3% or 3, but this is our calculation. You put the button result, just result, you get 55 sample. Okay, each group 55, cases 55 and control is also 55. Clear? Okay, answer 55 per group. Second, unmatched CC. ये जो था, ये सॉफ्टवेयर कौन सा था आपका, ओपन ईपी. ओपन ईपी में एक टाइप की सैंपल साइज निकलती है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते कुछ. लेकिन ये जो एन मास्टर दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, एन मास्टर सॉफ्टवेयर में आप इक्वल एलोकेशन में देखिए, हम केस कंट्रोल में क्या करते हैं, आपको पता है कि जितनी केसेस उतने कंट्रोल लेते हैं, लेकिन हम जितनी केसेस है उसके 2 टाइम्स 3 टाइम्स अप टू 4 टाइम्स भी कंट्रोल ले सकते हैं. तो आपको इक्वल एलोकेशन होना तो क्या, अगर इक्वल एलोकेशन नहीं होना, 1 केस इज इक्वल टू 2 कंट्रोल होना तो क्या, तो हम ये सिर्फ और सिर्फ एन मास्टर में ही निकाल सकते हैं. ओके, ये इसलिए IMP है,
अनमैच्ड केस कंट्रोल यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कभी भी, इसलिए हम यहाँ पे भी देखा, आपको मैं दिखाता हूँ बैक जाके, ये देखिए अनमैच्ड केस कंट्रोल। मैचिंग अलग, केस कंट्रोल मैचिंग करना कि यस मैचिंग इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ओके, फॉर व्हाट, टू अवॉइड द एक्स्ट्राजीनियस रिजल्ट और कंफाउंडिंग फैक्टर जो होते हैं उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो कम करने के लिए, ओके। लेकिन डिजाइन सिलेक्ट करते हुए अनमैच्ड सीसी सिलेक्ट करना है फॉर इक्वल एलोकेशन एंड अनइक्वल एलोकेशन। अनइक्वल एलोकेशन जैसे 1:3 मैंने रेशियो डाला था, यहाँ पे देखिए 1:3 आपको रेशियो दिख रहा होगा, तो मतलब मेरे स्टडी ग्रुप में या केस ग्रुप में 36 और सेकंड जो ग्रुप है कंट्रोल्स में 108। मैच सीसी और अनमैच्ड सीसी, मतलब मैचिंग किया तो क्या होता है कि स्टडी साइज बढ़ जाती है, इसलिए हम मैच नहीं करते, अनमैच वाला यूज करते। पर एक बेसिक रूल है यहाँ पे, यूजिंग द डिफॉल्ट नंबर एंटर 2 फॉर द ऑड्स। अगर आपको बहुत कुछ सोचना नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट 2 ऑड्स रेशियो डाल दो, ये 2 टाइम्स रिस्क है, एंड क्लिक ऑन कैलकुलेट। नोट दैट several methods produce different answers, but that 144 cases and 144 control should be enough। मतलब जब आपको कुछ अवेलेबल नहीं डाटा और केस कंट्रोल स्टडी करना है तो इसके लिए रेफरेंस है कि आप 144 दोनों इसमें ले सकते हैं, दोनों आर्म्स में। क्लियर? Many kinds of the bias in the interviewing, processing, etc. enter into the reliability of the actual study। एक्चुअल स्टडी में बहुत सारे बायस है, खास करके केस कंट्रोल में, वो बात नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट वन इज कोर्ट। कोर्ट स्टडी के लिए यहाँ पे हमने ऑड्स रेशियो यूज किया, वहां पर हमें आरआर रिलेटिव रिस्क यूज करना है। सिंपल, आपके सामने देखिए कोर्ट यूजिंग द आरआर, यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ अनएक्सपोज विद आउटकम, मतलब जो अनएक्सपोज है सिगरेट स्मोकिंग करने वाला ग्रुप और नहीं करने वाला ग्रुप। तो अनएक्सपोज मींस जो सिगरेट स्मोकिंग नहीं करता है वो वाला, लेकिन उसके बाद भी उसको कैंसर हुआ, ऐसे कितने पेशेंट है? 10। तो आपने इसके आधार पे बताया कि रिलेटिव रिस्क कितनी है, तो ये इमेजिन किया 3, तो 3 रिलेटिव रिस्क पे आपको पर ग्रुप में, एक्सपोज ग्रुप में भी 63 एंड नॉन एक्सपोज में भी 63 पेशेंट लेना पड़ेगा। ओके, वैसे ही आप ऑड्स रेशियो से भी कोड में निकाल सकते हैं। अगर आपने ऑड्स रेशियो 3 डाला, बाकी अपने आप ले लेते सभी, एक ही डालना है फिगर आपको कोई भी। अगर आपने ऑड्स रेशियो 3 डाला तो रिजल्ट चेंज। एक्सपोज में देखो जैसे आप इससे ले रहे तब तक, पेन क्यों बंद गिर गया? ओके ठीक है, तो ऑड्स रेशियो 3 से भी हमारे सैंपल्स आते हैं, सैंपल्स है 101, मेरा पेन बंद गिर गया इसलिए 101 और 101 इन नॉन एक्सपोज आल्सो। बेसिक सैंपल साइज रूल फॉर कोहॉर्ट, जैसे हमने वहां देखा था 144 ईच ग्रुप, वैसे यहाँ पे डिफॉल्ट नंबर प्रोवाइडेड, एंटर द 25% ऑफ एक्सपोज विद आउटकम। जहां पर हमने एंटर किया ना तो 10, यहाँ पर 25 एंटर करो तो आपको डिफॉल्ट मिल जाएंगी 98 to 118 इंटरव्यूज, इसके बीच में भी आप ले सकते हैं। नोट दैट सैंपल साइज कैलकुलेशन और बेस्ड ऑन द गेसेस, मतलब सैंपल साइज जो है ना गेस के ऊपर डिपेंड होता है, खास करके विल बी प्लेस्ड बाय रियल रिजल्ट। जब रियल रिजल्ट होगा ऑनलाइन या पेपर पब्लिश होगा तो आपको वो लेना है, जब तक वो नहीं है तब तक आप गेस के ऊपर भी सैंपल साइज निकाल सकते हैं। लास्ट वन इज क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में पैरेलल और क्रॉस ओवर 2 टाइप की स्टडी डिजाइन होती है। क्रॉस ओवर में ये मीन एक यहाँ पे एरो दे दो, ये एरो यही रहेगा। पैरेलल के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन एंड मीन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन देयर आर द 4 टाइप्स, सुपेरिटी अगेंस्ट प्लेसिबो, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट। सेम टू सेम ये जो 4 टाइप्स है ये मीन के ऊपर भी होते हैं। और दूसरा क्रॉस ओवर डिजाइन, क्रॉस ओवर का मीन और मीन के अंदर और 3 डिजाइन। तो हम सिर्फ इसकी मैं आइडिया देता हूँ आपको, क्योंकि काफी टफ नहीं है, लेकिन इसके लिए ऑफलाइन ट्रेनिंग की जरूरत होती है ज्यादातर। ओके, लेकिन आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए क्लिनिकल ट्रायल यूजिंग प्रोपोर्शन, अगर हम प्रोपोर्शन यूज कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया है कि और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल टू इवैल्यूएट इफेक्ट ऑफ द त्रयोदशांग गुगुर या निर्गुंडी पत्र उपना विथ आइबुप्रोफेन एंड डाइक्लोफेनेक सोडियम जेल।
टू रिड्यूस द पेन, मैंने क्या लिखा है, टू रिड्यूस द पेन। जब टू रिड्यूस द पेन लिखा है तो पेन कौन सा है, पेन क्या है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव है, तो क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव मतलब प्रोपोर्शनल है, और जब भी प्रोपोर्शन होगा तब हमें क्या करना है, देखो ट्रायल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप है, प्रोपोर्शन होगा तो हम पैरेलल में जाके सिर्फ प्रोपोर्शन सिलेक्ट करेंगे और सुपीरियरिटी यूज करेंगे। सुपीरियर डिजाइन है, हमने सुपीरियरिटी का दावा किया, सैंपल है 42 पर आर्म, ओके। सेकंड सुपीरियरिटी अगेंस्ट प्लेसिबो, अगर हम स्टैंडर्ड ड्रग की जगह प्लेसिबो ट्रीटमेंट यूज करते हैं तो हमारे सैंपल से एकदम बढ़ जाएंगे, एकदम कितनी थी 42 से 278 हो गई, तो हमने प्लेसिबो यूज किया। आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे कॉन्संट्रेट करिए, प्रोपोर्शन इन द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट 0.4 मतलब 40%। आपके पास डाटा मिला आपको कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से 40% रिलीफ मिलता है, ओके। और आपने दावा किया, आपने गेस किया, आपने प्रपोज किया कि योर ट्रीटमेंट मतलब न्यूअर ट्रीटमेंट will be effective up to 70%. This difference between the two proportion should not more than 30. Note that. If you increase the difference, your sample size should be reduces. But more than 30% difference is not allowed statistically. Clear? Okay. Then parallel and equivalent. That is Bharingi with थियोफाइलिन। आपने दावा क्या किया कि हमारे जो भारंगी है वो थियोफाइलिन जैसी काम करती है, इक्विवेलेंट ट्रायल। हम यहाँ पे ये दावा नहीं कर रहे कि उससे अच्छी है, हम इक्विवेलेंट का दावा कर रहे हैं, इक्विवेलेंट होंगी। और हियर डिफरेंस इज लेस देन 5%। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, हमने एक उसका एक डेफिनेशन बनाया, इक्विवेलेंट मींस लेस देन 5% डिफरेंस आएगा, बस इसके ऊपर आया तो उसको हम इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे, मतलब मोर देन 6 हुआ तो। करेक्ट, वेरी गुड। सैंपल साइज विल बी वेरी हायर, इक्विवेलेंट में बहुत ज्यादा सैंपल साइज आती है। और लास्ट होता है नॉन इंफीरियर। हम ये भी दावा कर सकते हैं कि भारंगी विथ थियोफाइलिन, नॉन इंफीरियर मींस ये भारंगी नॉन इंफीरियर है, मतलब इक्विवेलेंट ऐसा नहीं कि वो थियोफाइलिन की इतनी काम नहीं करती है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव के हिसाब से देखना है या फिर उसके साइड इफेक्ट के हिसाब से देखना है, तो हम ये दावा कर रहे हैं कि भारंगी की ट्रायल लेना चाहते हैं, नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल, ओके। तो हियर डिफरेंस ऑफ लेस देन 20% इन रिस्पॉन्स रेट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम कब बोलेंगे नॉन इंफीरियरिटी तक काम की करके, तो 20% तक कम से कम रिजल्ट उसने देना चाहिए, ओके, इंडिकेट द नॉन इंफीरियरिटी। फिर क्लिनिकल ट्रायल पैरेलल हैंड में यूजिंग मीन, जैसे फॉर एग्जांपल एक देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, लास्ट स्लाइड है ऑलमोस्ट, इफेक्ट ऑफ लेखन बस्ती। किसके साथ लेखन बस्ती का इफेक्ट हम देखना चाहते हैं, मुस्ता के साथ, टू रिड्यूस द वेट। अब यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो वेट है, वेट है मतलब आपकी स्टडी, आपका कंटिन्यूस डाटा है, दैट इज योर आउटकम शुड बी कंटिन्यूस, मींस यूजिंग मीन। अब देखिए जैसे मीन यूज करते ट्रायल ग्रुप में लेखन बस्ती और कंट्रोल में मुस्ता है, तो क्या होता है, वी अज्यूम इन एज ग्रुप 35 टू 39 ईयर ओल्ड लिया, वहां पे हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सेवन करने वालों का 132.86 एंड ESD 15.30 फॉर एग्जांपल। एट द सेम टाइम एसबी भी लिया, नॉन ओसी मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं लेते उनका भी हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिया, वो भी उसका एसडी अवेलेबल था। अब इस बेसिस पे हमने क्या किया, देखिए आप, ये है आपका ईपी इन्फो, ओपन ईपी भी आपका दो ऑप्शन है, मैंने जो बॉक्स किया है ना उसको देखिए, एक तो आप मीन डालिए, जस्ट मीन 132.86 एंड सेकंड मीन इज 127.44, तो भी आपको सैंपल साइज आ जाएंगे। या फिर आप दोनों को माइनस करके जो मैंने सेकंड बॉक्स में दिखाया सीधा उसका मीन डालिए, मीन नहीं उसका डिफरेंस डालिए 5.42, तो भी सेम सैंपल साइज आ जाएंगी 152 एंड 152 पर ग्रुप, दोनों तरफ सेम, ओके, यूजिंग मीन एंड यूजिंग मीन डिफरेंस, ओके। This is data from Yan Master. It is also from 152. Same to same 152. आपके पास पूरा डाटा है 152. And last slide. क्रॉसओवर डिजाइन, एक पैरेलल डिजाइन होती है, दूसरी क्रॉसओवर होती है। तो अगर क्रॉसओवर की हम बात करते हैं तो क्रॉसओवर में भी सुपेरिटी, इक्विवेलेंट और नॉन इंफीरियरिटी तीन टाइप होती है, पर क्रॉसओवर हम ज्यादा यूज नहीं करते इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक था आज का। सैंपल साइज इन क्लिनिकल ट्रायल में एक रूल है एट्रिशन बायस, मैंने कहा कि लॉस ऑफ फॉलोअप होता है, तो आपको 10% 20% एक्स्ट्रा सैंपल साइज लेना पड़ता है, इसको ड्रॉप आउट रेट, ओके। तो अगर ड्रॉप आउट ज्यादा है
तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10% मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 1.11, तो 10% आ जाएगा. चेंज एज पर स्टडी डिजाइन एज एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ फॉलो. और आप चेंज भी कर सकते हैं अप टू 20%, अप टू 18%, लाइक दैट, डिपेंडेड अपॉन द स्टडी डिजाइन एंड लॉस ऑफ फॉलो. This last slide. Thank you everyone having patience for 1.5 hours. This is social message, do not cut the trees. Thank you very much, one and all. Thank you so much, sir. Thanks a lot for your such a great knowledge. If anybody wants to ask any question to sir, you can ask. Yes, anytime. काफी बड़ा टॉपिक था ना. Yes, sir, but you are covering with very nicely, sir. आप देते इतना बड़ा कवर तो करना पड़ेगा ना मैडम. Anybody who wants to ask any question to sir? Any queries? I think no query. Yes. So thank you so much. I share, ma'am, you have a link of that MUHS lectures? MUHS recorded lecture, you have a link? Yes, sir, on YouTube. After completion of lecture, Dr. Krishna, sir, share that link, sir. Okay. Yes. No, this one, not this one. Old link from MUHS website. Yes, sir, we have that lecture series, sir. This lecture series link, please provide to your on group, share in on whatever maybe groups 1, 2 or 5, 6 group. Okay. तो जो उनके भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो वहां से समझ जाएंगे. कुछ होते हैं ना वहां पे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है. Yes, sir. Sir, we'll try to share that lecture series, sir. Okay. Yes, definitely, sir. Chalo, thank you, ma'am. Thank you so much, Dr. Kiran sir, for giving us such great knowledgeable lectures on sample size, and really special thanks for you, sir, for your busy from your busy schedule. You give us time. You give us your most precious time. Most welcome, ma'am. Most welcome for student. Always most welcome. Okay, thank you. I'm definitely sure each and every students will be helpful for this session is helpful for each and every student. The idea and execution of this lecture series is not possible without the help and guidance of Dr. Suryavanshi sir, Dr. Manoj sir, Dr. Chandurkar sir, Dr. Gaurav Savarkar sir, and our most favorite ATS student wing president, Dr. Krishna Devkar sir. So a great thanks for all of you. And not but least, thank you all the participants. Thank you so much. So we can stop the session over here. Thank you so much, all of you.